Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture of idioms and phrases. And today we shall try to complete this alphabet N. So the first idiom for today is no love lost between. नो लव लॉस बिटवीन का मतलब होता है कि दो पार्टीज के बीच में नफरत, एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर नफरत आ जाती है तो दैट इज नोन एज नो लव लॉस बिटवीन। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो नफरत, या फिर आप कह सकते हो बेसिकली अ डिसलाइक, और यू कैन से हेट्रेड एज वेल। ठीक है, आफ्टर डिसएग्रीमेंट या फिर आर्गुमेंट किसी के लिए इफ यू पोजेस समवॉट अ डिसलाइकिंग फीचर या फिर कह सकते हैं फीलिंग, तो आप कहोगे क्या, नो लव लॉस बिटवीन। जैसे कि वी कैन से वी कैन फ्रेम सेंटेंस ऑन बेसिस ऑफ से देयर्स नो लव लॉस्ट between the two rival politicians. So many politicians are there. तो अगर उनके बीच में थोड़ा बहुत कह सकते हैं लव का लॉस भी हो जाता है तो कुछ मैटर नहीं करता, लव का लॉस होता ही नहीं है एक्चुअली, बिकॉज दोज पार्टीज डू नॉट लव ईच अदर। ठीक है, दे डू नॉट केयर फॉर ईच अदर। तो वैसा यू कैन से कि नो लव इज लॉस बिटवीन द टू पार्टीज या फिर टू पॉलिटिशियंस। और वी कैन से दैट after a disagreement there's no love lost between former business partners. And no love lost between refers to that there is a feeling of dislike or feeling of hatred, or you can simply say not on good terms. People are not on good terms, not on good terms. When people are not on good terms, तो तब आप क्या use करोगे, no love lost between. Therefore we have framed two sentences, one on basis of politicians and the other one on basis of the business partners. And now we shall move on to the next idiom, which says no spring chicken. The second idiom for today is no spring chicken, means no more young. Obviously time is flowing out of our hands, and every time it is a matter of fact which makes us believe that this time will not be returning. So obviously our young days shall not come back. Therefore we have an idiom for this which says no spring chicken. So in order to frame its sentence we can say that at 60 he's no spring chicken, but he still runs marathon. Some people are quite active even at the age of 60, though they are not young, but they are active. Therefore, I have written no spring chicken means they are no longer young, but they are still running a marathon. Like this, you can also frame a sentence. Say, this car is no spring chicken, yet it runs well. There are certain objects which are no longer young. जब आप खरीदते हो तो they must be young at the time of their manufacture, at the time of their sale, but after some time the things start deteriorating on basis of their age, we can say, or on quality, and after usage also things start getting destroyed.
with the constant use of this. So that's why I have framed a sentence on basis of car which says no spring chicken. Therefore, our second idiom has been covered, which says no spring chicken means no more young. Moving on to the next idiom, we have the third idiom, which says no strings attached. नो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब होता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी restrictions. When there are no rules to be followed, when there are no restrictions to be imposed, then we can say that no strings attached, or we can say that without any condition we can say. So what can be done is, she gave me her old car with no strings attached. ठीक है, तो receiving something from someone without any condition or restriction can lead to a framing a sentence which says that she gave me her old car with no strings attached, or we can say that the company offered the grant with no strings attached. There are certain policies which companies has to obey or to follow. Therefore, the grant was approved by the company without any restrictions or without imposing any conditions. Now, moving on to the next idiom, we have not breath a word. Means if something is hidden or something is kept as a secret, that has to be kept as a secret until and unless the owner of the secret asks you to reveal it. मतलब आपको कुछ नहीं बोलना है, you should not say anything about the secret, so you should stay silent about the secret. So you can say that, please don't breathe a word about tomorrow's surprise party. ठीक है, you can say it like, please do not breathe a word about tomorrow's surprise party, or we can say that I will not breathe a word about what happened last night. Like this, these are the easy peasy sentences. But another sentence that could be framed is like, जो politicians होते हैं, in order to hide their scandal, they do not let the word come out of their mouth about that scandal. So you can frame sentence on that, that is the scandal related to some politician, without naming anyone, of course. So moving on to the next idiom, we have the fifth one, which says not fit to hold candle. नॉट फिट टू होल्ड कैंडल का मतलब हो गया इंफीरियर. ठीक है, इंफीरियर. अगर आप किसी के सामने थोड़ा छोटा महसूस कर रहे हो तो यू आर नॉट फिट टू होल्ड द कैंडल. ऑब्वियसली अगर आप किसी कह सकते हैं कि किसी आर्टिस्ट के पास जाते हैं एंड यू आर नॉट दैट गुड आर्टिस्ट एज द आर्टिस्ट हिमसेल्फ, तो यू विल ऑब्वियसली बी फीलिंग inferior to that body. So you can frame sentence on that. For now, I would like to frame
um we can say that the new restaurant is excellent. Other hotels are not fit to hold candle in front of it. ठीक है, तो you can say that um not fit to hold candles, मतलब the new restaurant is excellent, others are not able to hold the candle in front of it. uh, so like this, more sentences could be framed like the artist was good enough that other singers could not or were not able to hold the handle. या फिर you can say regarding the subject, we can say the subject mastery. If you have mastered something on some topic of yours, so then also you can frame a sentence leading to which you will be using the idiom not fit to hold the candle. Now, moving on to the next idiom, we have the sixth idiom related to holding itself, which says not able to hold water. Obviously, we if we try to hold water, will we be able to hold it? No, it will be very difficult for us to hold water, like it is difficult for us to hold sand. So something, if someone tries to hold water, so that can be said to as unbelievable, या फिर something of worth not believing. ठीक है, तो we can say that worth not believing. So many sentences could be again framed on this idiom, which has its meaning as unbelievable. We can say that the argument doesn't hold water, it lacks the conceptual proof. ठीक है, तो doesn't hold water, not, you can directly say it, not hold water. Not able की जगह not hold water, which means worth not believing, या फिर the argument does not hold water as it is based on assumption, or you can say that as it lacks conceptual proofs. Another is, mm, we can say the theory isn't valid. The theory isn't valid as uh, isn't valid. It doesn't hold water. You need to frame it. It doesn't hold water for scrutiny. स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? डजंट होल्ड वाटर. स्क्रूटनी का मतलब होता है समथिंग दैट हैज गॉन फॉर चेकअप, लाइक एक्यूरेसी है कि नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट है कि नहीं है, प्रॉपर कह सकते हैं कि एक तरीके से चीज़ों को अगर परखा जाना चाहिए बाय द एसोसिएशन, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्क्रूटनी. सो ऑन दिस पेज वी हैव कवर्ड टू idioms. One is the fifth one, which says not fit to hold candle, and the another one which says not hold water. So holding candle means inferior and holding water means not worth believing. Now moving on to the next idiom, we have the seventh idiom, which says not make head or tail. मतलब something which is very complex to understand, something
which is very complex. Obviously, देखो, if you try to look at this idiom in Hindi, then if I give you somewhat this structure, so will you be able to make out which portion of this is head and which portion of this is tail? तो कोई भी ऐसी चीज जिसका आपको सिर पैर का पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरफ सिर है किस तरफ पैर है, तो वैसा चीज। या फिर आप क्या कह सकते हो, इफ समवन इज लाइंग ऑन द बेड विद कवर्ड, वी कैन से द कवर्ड ब्लैंकेट, तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट कि हेड किस तरफ है और टेल किस तरफ है। ठीक है, सो विद दीज टू एग्जांपल्स यू कैन रिलेट, not make head or tail. So like this you can understand the meaning, that is you are not able to understand which part is head or which part is tail. So in order to frame its sentence, we can say that I am not able to make a head or tail of the complex math problem. For some people, maths problems are always complex. Therefore, the person who is disturbed by these problems has tried to use this idiom in such a way that which says that I am not able to make a head or tail. I am not able to make a head और टेल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि सोल्यूशन कहाँ से करना शुरू करें क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम वी हैव नॉट दिस वन इज एट इडियम। ओके, सो एट इडियम थोड़ा सा बड़ा इडियम है और थोड़ा सा कह सकते हैं मीनिंग थोड़ा अलग हटके भी है इसका मीनिंग। मतलब ऐसा होता है कि वेन एवर समवन गिफ्ट्स यू समथिंग, तो आपकी इनर हैबिट होती है या फिर नेचर होता है मोस्ट ऑफ द पीपल का कि दे वांट टू कमेंट इट। अब कमेंट कुड बी पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर और अकॉर्डिंग टू योर नेचर कमेंट्स कैन बी ऑफ both the sorts. So what happens is basically most of the people who comment in the negative part, supposedly someone has gifted you something and you are saying ये क्या दे दिया, ये नहीं देना चाहिए था, ये वो like this and that sort। तो अगर चीज़ें कमेंट सेक्शन में आ रही हैं आफ्टर रिसीविंग अ गिफ्ट, अगर आप चीज़ों के बारे में गलत सलत बोल रहे हो अबाउट दैट गिफ्ट, तो यू शुड नॉट डू दैट। एंड इफ पर्सन इज डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू द सेम थिंग, तो आप क्या करोगे, यू विल रिसाइट दिस इडियम। एक्चुअली रिसाइटेशन ही है बिकॉज इट इज समवॉट अ बिग इडियम, तो रिसाइटेशन ही हो गई। तो रिसाइट दिस इडियम इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। सो वी कैन से दैट नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब क्या हुआ, टू नॉट, या फिर यू कैन से नॉट टू से एनीथिंग बैड अबाउट द गिफ्ट। कोई भी अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट इट विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो यू शुड कीप दैट स्माइल वेन एवर यू ओपन दैट गिफ्ट। इट इज नॉट फॉर दैट बडी that you are just keeping or posing a smile or just forcing a smile on your face. You should keep it otherwise as well, because this is the part of gift and gifts are received by very special people, so you should always respect receiving gifts. So now, in order to frame its sentence, we can say that it's free ticket
to concert. So don't look a gift horse in the mouth. ठीक है, तो आई होप दिस idiom is very clear. along with this Along with this sentence in which you have received a um, tickets free tickets of the concert, some concert होगा, तो you got a lottery prize, you got some prize sort of, तो you should always you should never say bad about the gift. ठीक है, मिला है तो you should respect it no matter what. Moving on to the next idiom, we have the ninth idiom, which says not to mince matters, या फिर not to mince words. मतलब कह सकते हो to speak directly but politely. सीधा जाके बोल देना है जो भी आपको फील हो रहा है, बट बोलना तो सीधा है, बट किस वे में? इन अ वेरी पोलाइट मैनर. सो यू कैन से दैट not to mince words, your performance has been subpar. आपने बोल दिया है सीधा जाकर के क्या, कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज मीडियोकर लेवल, एवरेज लेवल की थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो जो लोग झूठी तारीफें कर रहे थे, किसी बंदे ने जाकर के सच बोल दिया, सेइंग दैट योर परफॉर्मेंस हैज़ बीन अ सब पार, नॉट टू मीन्स वर्ड्स. मतलब आई हैव कम टू स्पीक यू डायरेक्टली दैट योर परफॉर्मेंस हैज़ बीन सब पार. या फिर वी कैन से दैट लेट्स नॉट mince matters, the project is facing challenges. ठीक है, तो if I speak directly then our project is facing challenges, let's not mince matters. ठीक है, तो mince matters का मतलब हो गया to speak directly या फिर speak very politely. Like this, in the first one we have told someone about her performance, and in the second one we have been discussing about the project which is constantly facing challenges. Now moving on to the next one, we have the 10th idiom, which says nothing to sneeze at. मतलब ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो. यू शुड टेक दैट थिंग इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि उसको माइलस्टोन ही बना दिया जाए, बट इम्पॉर्टेंट. यू कैन से इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर कह सकते हैं कि कोई भी वी कैन से दैट अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन आ रही है फ्रॉम द टीम इटसेल्फ regarding the meeting time and so on the WhatsApp group, so that is not something to be sneezed at. You should always take that message as important and should not we can say ignore it. एक तो ये सेंटेंस बन सकता है, या फिर क्या सेंटेंस बन सकता है, we can frame another sentence which says that a 10% discount might seem a very little, might seem not a, might seem very little, but it is not something to sneeze at. See, whenever you pay the bigger amounts, so even 10% might help you to save lakhs or thousands of money.
So you should always consider even the slightest of the discount, and over here the discount refers to free gift. So as I've told you, you should not look a gift with a horse mouth open. So with this, a 10% discount might seem very little, but it is not something to sneeze at. Matlab, it is quite important if you consider a 10% discount, because it can help you to save money up till we can say lakhs or thousands of rupees. So another sentence could be framed by you in the homework. Moving on to the next idiom, we have the 11th idiom, which says nothing ventured, nothing lost. Sorry, nothing gained. Nothing ventured and nothing gained refers to, means if you need to, if you dream, we can say, if you dream to achieve something, you should work hard. जैसे कि यहाँ पर एक लड़की को हार्ड वर्क करा देते. She started her own business knowing nothing ventured. जब तक खुद से जाकर के ट्राई नहीं करोगे तब तक चीजें, यू विल नॉट बी गेनिंग एनीथिंग. तो नथिंग वेंचर्ड, नथिंग गेन्ड. नथिंग गेन. ठीक है, तो या तो ये कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, if you will not apply for job, you'll definitely will not get in. सोचो, आपने जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया है एंड यू आर होपिंग कि चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी एंड यू विल बी गिवन अ लेटर. तो ऐसा तो नहीं होगा until and unless you apply. So here it comes, nothing ventured, nothing gained. तो जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी. अगर आप सोच रहे हो कि सारी वीडियोस देख करके वी विल बी एबल टू फ्रेम सेंटेंस और जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कर नहीं रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज टिल नाउ वी मस्ट हैव फ्रेम्ड अबव 100 सेंटेंसेस. तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि सेंटेंसेस देखकर दिमाग में आ जाता है कि पॉलिटिशियन को कब लेकर आना है, स्कैंडल को कब लेकर आना है, कंपनी को कब लेकर आना है, ही शी को कब लेकर आना है, आर्टिस्ट को कब लेकर आना है, म्यूजिशियंस को कब लेकर आना है, किस सेंटेंस के अंदर हम किड्स को लेकर आ सकते हैं, किस सेंटेंसेस के अंदर हम ओल्ड कार का यूज कर सकते हैं, या किस सेंटेंस के अंदर हम किड्स को अम्यूजमेंट पार्क घुमा सकते हैं. सो लाइक दिस थिंग्स हैव चेंज. अगर आपने अभी तक के सारी सीरीज देखे होंगे तो यू मस्ट बी ग्रैबिंग थिंग्स, और आगे आने वाली पूरी सीरीज अगर आप कंप्लीट करोगे तो ऑब्वियसली आपका माइंड सेट उतना हाई पहुंच जाएगा कि आप सेंटेंस देखोगे, इडियम देखोगे एंड यू विल बी एबल टू ग्रैब कि हाँ अभी मुझे किड्स लेकर आने थे या फिर अभी मुझे किसी ओल्डी को लेकर आना है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. ठीक है, सो this was the last idiom for alphabet N. I hope you must have covered all the videos till date. So keep subscribing to our channel and keep loving our videos. Thank you and keep watching our videos.